असम के सोनितपुर जिले के तहत डेकियाजुली पुलिस थाना क्षेत्र के सराजुली गांव में आज शाम एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना की सूचना मिलते ही डेकियाजुली पुलिस टीम उप निरीक्षक जाकिर हुसैन के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। बताया जा रहा है कि डेकियाजुली थाना क्षेत्र के सराजुली गांव निवासी माधव राय नामक 23 वर्षीय युवक ने शाम लगभग 6:30 पर अपने घर के अंदर छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। असम से प्रशांत बैस की रिपोर्ट। ঘটনাটো মানে ঘৰত কিবা এটা শব্দ হৈ আছে, পিছত ইহঁতৰ ঘৰৰ মানুহখিনি দৌৰি আমাৰ তাত গৈছে। আমাৰ ওচৰ একেলগতে ঘৰ, কৈ চাওকচোন ঘৰত কি শব্দ হৈ আছে। সিহঁতে আমি আহি চটপট দৰ্জাটো ফটককৈ ভাঙিব নোৱাৰোঁ, দৰ্জাটো ভাঙিতে সময় লাগিছে। দৰ্জাটো ভাঙি দেখোন সি ওলমি আছে আৰু লগে লগে তাৰ এই মাধৱ ৰয়। নাই 23 বছৰ দিছে তাত, 23 22-23 মান হ'ব আৰু। একো গম নাপায়, কোনেও গম নাপায়। কোনো কাৰো লগত কাজিয়া নাই, ঝগড়া নাই, একোৱে নাই তাৰ। কাৰো লগত কাজিয়াও নকৰে। এইটো 6টা 6:30 মানত অনুমানিক। নিজৰ ঘৰতে, নিজৰ ৰুমতে।